Today we will discuss about the pharmacology of ibuprofen. Ibuprofen is actually non-steroidal anti-inflammatory drug that's called as NSAID. Introduction. Ibuprofen is one of the most commonly used over-the-counter drugs. Belongs to propanoic acid derivatives class of NSAIDs. Discovered in 1960s, introduced in 1969 as safer alternative to aspirin, widely used for pain, fever, and inflammation. Chemical structure. This is the chemical structure of ibuprofen. Chemical name plus minus dash 2 dash 4 dash 2 methyl propyl phenyl propanoic acid. Molecular formula is carbon 13, hydrogen 18, and oxygen 2. It is a racemic mixture R and S enantiomers. Enantiomers वगैरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ चुके होंगे. S enantiomer is more active pharmacologically. Mechanism of action of ibuprofen. This is the normal mechanism before when a tissue injury occurs, it leads to injury to phospholipid cell membrane and it phospholipase A2 that causes release of arachidonic acid from phospholipid membrane. Arachidonic acid is converted into further two pathway, cyclooxygenase pathway COX-1, COX-2 and 5-lipoxygenase pathway that leads to leukotrienes. Leukotrienes cause bronchoconstriction, asthma attacks, smooth muscle contraction, and prostaglandin and cyclooxygenase pathway is converted into prostaglandin G2 and then further converted into prostaglandin H2 that is further converted into prostacyclin, prostaglandin and thromboxane. प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो काज करता है पेन और इन्फ्लेमेशन और थ्रोम्बेंगजिन जो है काज करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को. इसी तरह ibuprofen is a non-selective inhibitor of cyclooxygenase enzyme COX-1 and COX-2. जो cyclooxygenase enzymes है वो दो तरह के होते हैं COX-1 और COX-2. blocks conversion of arachidonic acid to prostaglandins. जब हम ibuprofen लेते हैं तो ये arachidonic acid की conversion को रोकता है prostaglandins में and it reduces prostaglandins responsible for pain, inflammation and fever. और जब prostaglandins को रिड्यूस कर देगा ये ब्लॉक कर देगा ये कन्वर्जन इसकी आर्किडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन फिर हमें पेन इन्फ्लेमेशन और फीवर नहीं होगा वो कम हो जाएगा. अनलाइक एस्प्रिन इनहिबिशन इज रिवर्सिबल. इनहिबिशन इज रिवर्सिबल मींस दोबारा कुछ टाइम के बाद ये दोबारा पेन या इन्फ्लेमेशन दोबारा हो सकती है अगर हम इसको क्योंकि ये रिवर्सिबल है रिसेप्टर से जुड़ने के बाद दोबारा ये वहाँ से जगह से दोबारा सेम सिचुएशन में आ जाता है. लेकिन एस्प्रिन जो है उसकी इनहिबिशन जो है इरिवर्सिबल है और जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते. देन हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे. हाउ ibuprofen works. Arachidonic acid is converted into prostaglandins via COX enzymes that cause pain, fever, inflammation. But when ibuprofen blocks this pathway peripherally and centrally. Then we have pharmacological effects. Analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiplatelet. Analgesic में हमारे पास relieves mild to moderate pain such as headache, dental muscular. Anti-inflammatory reduces swelling in arthritis injuries. Antipyretic lowers fever. Antiplatelet mild but less than aspirin. Further we have pharmacokinetics. Absorption rapidly absorbed from gastrointestinal tract, peak plasma level and 1 to 2 hours better with food. Distribution highly protein bound more than 99%. Low volume of distribution. Metabolism livers cytochrome P2C9 R2S in enantiomer conversion. Excretion kidney, kidney, urine, half life 4 to 4 hours. Bioavailability is almost 100%. आगे हम पढ़ेंगे यूजेस और इंडिकेशंस. किन सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं. अगर हमें हेडेक, टोथेक, डिस्मेनोरिया हो, माइल्ड टू मॉडरेट पेन उसमें यूज़ होता है. फीवर रिडक्शन के लिए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, पैटर्न डक्टिस, आर्ट्रियोसिस एंड यूनिट्स आईवी फार्म. देन हमारे पास डोजेज कि अडल्ट और पीडियाट्रिक में हम कैसे यूज़ करते हैं.
Adults के अंदर 200 to 400 mg every 6 to 8 hours, maximum 1200 mg per day, up to 2400 mg according to prescription. In children, less than 6 मंथ हम नहीं देते बच्चों को, और जिनकी एज 6 मंथ से ज़्यादा होती है उनमें हम 5 to 10 mg पर किलोग्राम एवरी 6 to 8 hours देते हैं. Always start with the lowest effective dose. Take with food, milk to reduce gastrointestinal upset. Then we have common side effects. Nausea हो सकता है, vomiting, dyspepsia, ulcer, headache, dizziness, rash वगैरह भी हो सकती है, edema और tinnitus भी हो सकती है. फिर हमारे पास contraindications हैं, active peptic ulcer और gastrointestinal bleeding, history of NSAIDs, aspirin allergy, urticaria, asthma, third trimester pregnancy, risk to fetus, severe renal hepatic impairment, post CABG surgery. ये contraindications हैं. फिर हमारे पास precautions and warnings. Use cautiously in elderly, hypertension, heart failure, avoid long-term use. Black box warning. Federal Drug Authority severe risk and GI bleeding. Not for children less than 6 months. Monitor in patient with asthma, bleeding disorders. Then we have drug interactions. Increases effect of warfarin, bleeding risk lithium. जब हम इसको वारफरिन या लिथियम के साथ लेते हैं तो इनका इफेक्ट बढ़ जाता है. वारफरिन का काम क्या है? ब्लीडिंग काज करवाना, एंड ये ब्लड थिनर भी है. रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एस इनहिबिटर्स और डायूरेटिक्स. जब ये डायूरेटिक्स या एस इनहिबिटर्स के साथ कंबाइन ली जाती है तो ये इसका इफेक्ट कम हो जाता है एंटी हाइपरटेंसिव का. whereas एस्प्रिन में रिड्यूस कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ लो डोज एस्प्रिन. फिर हमारे पास है अवॉइड विद अदर NSAIDs. Then we have overdose and management. Symptoms: nausea, vomiting, abdominal pain, drowsiness, really severe. Management: sportive activated charcoal, symptomatic treatment. No specific antidote. Pregnancy and breastfeeding. Avoid in last 3 months. Consult doctor in first 6 months of breastfeeding. कॉमन ब्रांड्स पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं इबुप्रोफेन के नाम से. कुछ मल्टीनेशनल हैं और कुछ लोकल हैं. ठीक है. इबुप्रोफेन के नाम से DS, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिरप मेंशन की है, इसकी टैबलेट्स भी हैं. आपकी असाइनमेंट ये है कि इबुप्रोफेन के जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी कंपनीज आपने देखनी है, सर्च करनी है. इस तरह फिल्टर्स आइबुल्स 100 mg, 500 ml सस्पेंशन, 120 ml. ACI पाकिस्तान या LCI पाकिस्तान लकी कोर इंडस्ट्रीज हम इसे कहते हैं. कोलोसेरम 120 ml. बोस्चोफिन 100 ml IV इन्फ्यूजन. तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स, और मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगा. थैंक यू सो मच.